Welcome to the video. So today's video is going to be part 3 on technical communication, where I'll be teaching you the entire unit. Also, if you look at the first topic, that is traits of technical writing, which means what are the features you need to use when you're writing technically. Okay, so you should have clarity, accuracy, conciseness, and objectivity, on formal tone, audience centered, and also well structured. So what does it all mean? I'll explain. क्लैरिटी मतलब होता है सिंपल टू ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आपके अंदर क्लैरिटी हो, यू आर वेरी सिंपल टू योर वर्ड्स एंड ऑल्सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. एक्यूरेसी मतलब होता है कि आपका जो है फैक्ट सही होना चाहिए, डेटा सही होना चाहिए, आपके जो इंस्ट्रक्शंस वट एवर यू आर प्रोवाइडिंग दैम इट शुड बी एक्यूरेट अप टू द मार्क. कंसाइसनेस मीन्स नॉट एनी नेसेसरी, आई मीन जो भी आप बात करें बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी शुड हैव अननेसेसरी पॉइंट्स. ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है फोकस ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ओपिनियंस. तो जो भी चीज़ें फैक्ट पे बात की जा रही हैं, जो एक्चुअल में सच है, रादर देन टेकिंग ओपिनियंस ऑफ समवन, उसके बारे में बात होता है. ठीक है. फॉर्मल टोन, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड ऑल्सो हैव प्रोफेशनल टोन. आई मीन हाउ डू यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, एंड यू शुड बी not using informal languages like you use in between your family and friends, which is not allowed here. Okay, तो ऑडियंस सेंटर्ड क्या होता है? राइटिंग अकॉर्डिंग टू द रीडर्स नीड, मतलब कि यहाँ पर आप अपने रीडर के बारे में, जो भी आपका ऑडियंस है, मतलब ऑडियंस मतलब होता है जो जनता आपकी बात सुन रही है या फिर जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको लेटर लिखना है. इसमें कंसाइसनेस होना चाहिए, इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और आपको फैक्ट्स के ऊपर बात करना है, ना कि ओपिनियंस के ऊपर. और ये बहुत वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, सारी स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ताकि सामने वाले को कोई चीज़ ढूंढना ना पड़े. ठीक है. Principle of business writing. So what is the principle? So we will go through it. Purposeful, it should be very purposeful, it should be clear and concise, it should be professional tone, it should be correctness and completeness and positive tone. So these are the features, or you can say principle you need to use while writing a business letter. If we'll talk about purposeful, it should have a very clear goal, or it should have a very clear message. If we talk about clear and concise, the sentence should be short, and and you should use a direct language, not an indirect language. Okay, so you should be concise and clear what you want to say through your message. It should be professional, should be polite and respectful. You not use in the informal languages which you use in front of your siblings, or you can say your friends and family members. Okay, you need to be particular about it. And correctness means no grammatical error, spellings, or factual errors which you have fetched from your data. Okay, and you have to be positive tone, you should be encouraging, and you should be in a friendly language. Okay, friendly language doesn't mean that you have to be informal. It means you need to be very polite and respectful towards that person who is going to be your audience. Okay, so style of writing. So how you need to be what it should be your style when you are writing it. It should be formal, it should be neutral, it should be informal and persuasive and descriptive. Formal means professional and respectful. Neutral means balanced tone to for general communication. Okay, informal means casual, friendly, rare in technical communication writing. Okay, persuasive means used to convince the reader. Okay, the explanation or detail. Okay, so basically, do you know about description? It is like that, descriptive. Okay, so if we talk about formal, so you need to be very respectful, and you have to be professional while writing, and it has to be neutral. That means you need to maintain the boundary of being in the communication, because being balanced in your tone actually shows how well you are mature. And also, if it's for general communication. Informal, it is casually used here, because it is rarely used here, sorry, because it is really casual and it is a friendly language, which is actually rare in using here. And if we talk about persuasive, is used to convince someone, like whatever you're writing, your reader should get convinced through it. I mean, if someone wants to portray a message, a good, a positive message, so your reader should get convinced through it. So that is a persuasive. You need to be very respectful for that, because it has a very deep meaning. And if you want that person to be affected, or being pursued by that, so you have to be really professional through it. And if we talk about descriptive, it is used for explaining details, like giving a description of something. Okay, so if we talk about writing memos. Okay, memo means, it has come from the word from memo, and memo means
written message within a business or organization. So when you're writing a message to a business or organization, so that is a memo. So if I actually tell you more deep about it, like official written message used primarily for internal communication within an organization. Basically it is for internal use. I mean आपको एक जगह पे है जहाँ पर आपकी इंटरनली बात हो सकती है, मतलब आप जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है आपके, आप इंटरनली है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फिर बिजनेस हो सकता है जिसमें आप इंटरनली काम करते हो, एंड यू कैन जस्ट ट्रांसफर योर मैसेज थ्रू मेमो. ओके, तो बेसिकली आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये एक ऑफिशियल मैसेज तो होता ही है, बट ये जो है इंटरनली यूज़ होता है, लाइक विद इन ऑर्गेनाइजेशंस. कोई ऑर्गेनाइजेशन तो आसपास में जो है मैसेज शेयर कर सकती हैं, ठीक है. तो इसका फॉर्मेट देख सकते हैं. तो इसका पर्पस होता है कि लाइक अ क्विक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका पर्पस ये होता है. तो इसका फॉर्मेट अगर इफ़ यू लुक एट द फॉर्मेट, सो वी हैव टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट बॉडी फीचर्स. ओके, सो इसका मतलब ये एक फॉर्मेट है, ठीक है. तो आपको सबसे पहले टू लिखना है, आपको किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस बिजनेस के ऊपर देना है, ठीक है. फ्रॉम आप किस कहाँ से लिख रहे हैं. ओके, यू नीड टू राइट डेट, व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ इट शुड बी इन वन लाइन, बिकॉज what is the purpose of writing this memo. You have to be very clear about it so that the whoever the audience is will just get a glimpse in that subject. So if that person don't read the entire data, I mean entire body, then he will be familiar what is this subject about. Okay, so if I talk about body, so you need to have some introduction. What are you, who are you, I mean what details you're going to provide them, and conclusion and actions. So the features you have to use here, you should be very direct, you should have formal, and you should be short, because since it's a memo, it should not be too long, like giving a big paragraphs. It should not be too long as paragraphs, because it is a memo, so it should be short, and it should be concise. So you have to use your formal language here and direct, and it should be short. Okay, so if we talk about business letters, so what type? Inquiry, complaint, request, order, appreciation, or resign. Okay, so resignation. So if we talk about, there can be more business letters according to your need. So inquiry means कि कुछ चीज़ आपको पूछनी हो आप बिजनेस लेटर के अंदर, आई मीन बिजनेस लेटर की टाइप्स है, ठीक है. तो कोई भी इंक्वायरी हो सकती है रिलेटेड टू बिजनेस, और वॉट एवर क्वायरी यू हैव. यू कैन हैव एन एक्ट सम publish some complaints, whatever complaint you have according to your need. Or you can also request something if you actually want. You can order something, you can actually appreciation, you can actually appreciate someone, and you can even resign. I mean you can send a resignation letter also. So if we'll talk about, you have something query related to your product, so you can send it that. You can complain about your products, you can actually request that you should send this, or you can whatever request you have according to your need. Also if you want to order something, you can place your order. Also you can give your business letter to them. Actually you can give a feedback, that is through appreciation letter. Okay, so we will just go through this format quickly here. So sender's address, ठीक है. sender मतलब जो भेज रहा है, like if you are sending, then you need to write your address, and then you actually need to write the date, and then receiver's address, whomsoever is going to receive that letter. I mean if you're giving this application for, you have to write that address. So you need to write salutation. What is salutation? Basically you need to give some greetings, like hello ma'am, hello. So it should be really formal, it cannot be casual. Okay, body. So body should have three parts in it. You should write the intro, that whom you are, why are you writing this letter, and give your short debut. Okay, and if we talk about second part is going to be about details and closing. So whatever details you want to mention in that letter, you can mention, and closing is you're closing with this particular thing, and then you can close the letter. And then complimentary close, and then signature. So you must be thinking, what is complimentary close? I'll tell you. So if you talk about complimentary close, so complimentary close is a polite closing phrase that precedes your signature in the letter or email. So कुछ समझ नहीं आएगा, मैं बताती हूँ. So basically when you write your sincerely, best regards, your truly, तो ये इसी को complimentary close बोलते हैं. हालांकि आज तक किसी को पता नहीं होगा, because ये रेयरली कोई मेंशन करता है, बट यू गॉट टू नो अबाउट इट. दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. व्हेन यू राइट समथिंग, हालांकि यूज़ सब करते हैं व्हेन दे राइट लेटर्स एट द एंड, योर ट्रूली, योर बिलव्ड, whatever compliment you would like to give yourself, it's written here. So ये आपके precedes का मतलब होता है कि आपके सिग्नेचर के पहले आता है, ठीक है. एंड आपके सिग्नेचर के पहले, और फिर आगे सिग्नेचर के फिर बाद में प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है.
तो ये अभी पहले जो है सिग्नेचर आपका, पहले आपका योर ट्रूली या फिर जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो आता है, उसके बाद आपका सिग्नेचर आता है, ठीक है, एंड देन you end up your letter. Okay, so this is a complimentary clause means, and it should be really, formal. This is sincerely, and we can give best regards, your truly, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रिपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स, so definition we will go through. A report presents information in a structured factual way. सो इफ़ यू टॉक अबाउट रिपोर्ट, सो रिपोर्ट जो है एक रिप्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को, जो ये स्ट्रक्चर में होता है वो फैक्चुअल रिपोर्ट होता है, मीन्स दे इट टॉक्स अबाउट फैक्ट्स नॉट ओपिनियंस। ओके, सो देयर आर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स in which we have information reports, analytical reports, lab scientific reports, project reports. So if we just go through the definition, so information reports is just facts. I mean, they can be a progress report card. I mean, information report, if we talk about your 10th mark sheet or 12th mark sheet or whatever information it's providing towards you, it's called information reports. I mean, whatever information is providing you, that is information reports. So it includes analytical and recommendation. I mean, it just gives an analyzing of something, whatever you have analyzed through the data, and it actually gives a recommendation, what recommendation you need to proceed more further. So if we talk about feasible report, so checks if a plan is workable. So what does feasible means? So if we just I actually explain you about feasible. फिजिबल रिपोर्ट्स मतलब कोई भी एक ऐसा एक्शन जो आप लेना चाहते हो, ठीक है, एंड आप उसको चेक करते हो कि क्या ये वर्केबल है कि नहीं। अब ये बहुत टाइप का हो सकता है, बट हम यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें ये देखेंगे कि आप जो प्लान बना रहे हो क्या वो काम करने वाला है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स, इट प्रेजेंट्स एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। द रिपोर्ट्स विच यू यूज टू प्रेजेंट, आई मीन, इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल, like when you were in your 11th 12th, even in your first year, you used to write some reports in which you write to give experiment, what experiment you have performed. Like you can take the example of experiment 1, in which you need to perform something a acid base radical, and you have performed this prism experiment where do you see, I mean, how many images or how many angles, okay, are how many cases are being detected by a prism. So these reports which you have done experiment and which actually gives you result. If you talk about titration, so titration is also a scientific report in which you have performed titration, and with the help of titration you see the results and you see readings, so that is a scientific reports. Okay, if we talk about project reports, so it is, there is a project going on, so it will actually give you a summary of it. So what is that project upon, how is this project leading, how is that project further going to lead more. So that is a project report. Okay, now we talk about characteristics and format and structures of technical reports. So here we are. So characteristics मतलब होता है कि उसकी फीचर्स, ठीक है, और फॉर्मेट उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो characteristics मतलब कि उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। इट शुड बी फैक्चुअल। एक्चुअली इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट ओपिनियन, इफ़ यू डोंट अबाउट फैक्ट्स, सो दैट इज़ नॉट अ रिपोर्ट, ठीक है। तो इट शुड हैव फैक्ट्स rather than opinion. It should have an objective, I mean, what is the purpose behind it. It should be clear and organized and based on research data. That's what I said, it should be research. That is called only factual. I mean, it should have correct facts which really exist. Okay, so if we talk about formal format and structure, तो उसको सबसे पहले एक टाइटल होना चाहिए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और समरी, ठीक है। उसके बाद एक टेबल होना, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग, रिजल्ट, डिस्कशन एंड एनालिटिक्स, एंड कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, रेफरेंस एंड appendices. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस इन डिटेल. सो इट शुड हैव अ टाइटल, ठीक है, जिस बारे में रिपोर्ट है उसके बारे में उसकी थोड़ी समरी दे दो, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत टेबल कंटेंट हो, जिसमें जैसे आप थोड़ा टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहे हो जो भी आपका रिपोर्ट है उसके बारे में। जैसे अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ टाइट्रेशन का, ठीक है। तो दिस इज़ गोना बी अ साइंटिफिक रिपोर्ट्स, ठीक है। तो हम एक साइंटिफिक रिपोर्ट परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइटल देंगे कि हमारा किस चीज़ के ऊपर ये रिपोर्ट होने वाला है, इट गोना बी ऑन टाइट्रेशन, तो हम टाइट्रेशन हेडिंग देंगे। सो वी विल गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट इज़ टाइट्रेशन, हाउ इट इज़ लाइक परफॉर्म, थोड़े बहुत उसके प्रोसीजर दे देंगे कि वो कैसे
उसकी क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे हम टाइटेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम जो टेबल जो रीड करते हैं, रीडिंग जो हम पिपेट से रीडिंग निकालते हैं, जब तक वो कलर पिंक ना हो जाए तो वो टेबल कंटेंट होता है। लेकिन हम टेबल बनाएंगे, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि कौन सी वो वैल्यू थी जिसके ऊपर हमारा कलर जो है वो पिंक एक्चुअल में शो होने लगा, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है मतलब मेथोलॉजी मतलब होता है मेथड्स, कैसे कैसे मेथड प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद हम कैसे रिज़ल्ट ढूंढेंगे, कैसे हमने रिज़ल्ट ढूंढा, और उसके एनालिसिस मतलब एनालाइज ही कर रहे हो ना कि आप कब कैसे है वो जो पिंक कलर चेंज हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन दोगे कि ऐसे चेंज होगा, थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस दे दो जिसमें हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और अपेंडिक्स क्या होता है? It is the section at the end of the report that provides supplementary information that is not the essential to main text but helps the reader to understand and evaluate and replicate the study. So what does that all means? Appendices मतलब होता है कि जो end of the report में लिखा जाता है, basically से short conclusion. इट्स नॉट कंक्लूजन, बेसिकली ये बिल्कुल टेक्स्ट का मेन पार्ट नहीं होता है, बट ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि पूरे के पूरी जो समरी आपने लिखी है उसका थोड़ा सा ग्लिम्स आ जाए उस इंसान को, और थोड़ा बहुत वो रेप्लिकेट कर ले स्टडी को। रेप्लिकेट मतलब होता है उस स्टडी को वो समझ ले, ठीक है। रेप्लिकेट मतलब इस तरीके से उसको एक कॉपी नज़र आ जाए, उस एग्जैक्ट पूरा ग्लिम्स आ जाए उस इंसान के पास उस चीज़ के पास। कि ये ज़रूरी नहीं होता, बट यू शुड राइट, लिख सकते हो आप, ठीक है। तो राइटिंग रिसर्च पेपर्स, ठीक है। तो अब राइटिंग रिसर्च पेपर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है चूज़ अ टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर हम रिसर्च करने वाले हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके अंदर एक आउटलाइन बनाओ, ठीक है। राइट इंट्रोडक्शन, राइट बॉडी, आर्ग्यूमेंट, स्टेट, डिस्कशन, राइट कंक्लूजन, सिटी, सोर्स, ठीक है। तो एडिट एंड प्रूव्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो फीचर्स क्या होते हैं, फॉर्मल होना चाहिए, एकेडमिक, एविडेंस बेस्ड। तो यहाँ पर आपको बहुत, जैसे अगर रिसर्च पेपर के राइटिंग में बारे में बात करें तो रिसर्च पेपर क्या होता है, आई मीन यू आर रिसर्चिंग अबाउट इट समथिंग, ठीक है। जिस टॉपिक के बारे में रिसर्च करें इट शुड हैव अ क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। पूरी रिसर्च करो उसके बारे में, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, उसके ऊपर आउटलाइंस बनाओ कि हाँ ये आउटलाइन की, इसके बाद ये हुआ था, ये इसके बाद हुआ था। उसके बाद उसको इंट्रोडक्शन दो, थोड़ा सा उसके बॉडी के बारे में बताओ, उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी डेट्स, उसकी डिस्कशन क्या क्या हुआ है। उसके बाद कंक्लूजन निकालो कि आपने उस रिसर्च को लाइक रिसर्च, इतना बड़ा रिसर्च करके आपने क्या उसके अंदर एक्चुअल एंड में आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। फिर साइट सोर्सेस लिख सकते हो जिसमें आपने कहाँ कहाँ से सोर्सेस लिए हैं, कहाँ कहाँ से आपका जो एविडेंस आपने उठाया है, कहाँ से चीज़ें लिए हैं। और आप जो है प्रूफ दे सकते होगे, क्योंकि आपके रिसर्च जो एविडेंस है उसमें थोड़ा बहुत एरर्स भी हो सकते हैं, तो आप वो सब देखो, ऑब्ज़र्व करो, तो उसके ऊपर आप रिसर्च बना सकते हो, ठीक है।